देखना बच्चे, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, लॉज ऑफ photoelectric emission. तो what are the laws of photoelectric emission? First law यही है intensity वाला. On one side we are having intensity, on the other side we are having photoelectric current. ये ग्राफ आपको मिलता है. सेकेंड लॉ, I1 इंटेंसिटी, दिस इज फॉर I2 इंटेंसिटी. ये था हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल. दिस वाज द पोटेंशियल एंड दिस वाज द करंट. थर्ड लॉ हमारा था ये फ्रीक्वेंसी, दिस वाज द फ्रीक्वेंसी and this was the stopping potential. Stopping potential चेक करना होगा. फर्स्ट में आप लिखेंगे एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. करंट की बजाय आप ऐसा लिखिए एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, the number of electron ejected per second, the number of electron ejected per second from the photosensitive metal plate increases. As a result, the photoelectric current increases. So as we increase the intensity of incident radiation, the number of electron ejected per second from the photosensitive metal plate increases. As a result, photoelectric current increases. Second point is effect of potential versus current. For higher intensity radiation, the stopping potential required to stop the emitted photoelectron is same. अगर आप हायर इंटेंसिटी की रेडिएशन भी फॉल कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए वो सेम है. दैट मीन्स इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम है. इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती. इसमें आप कह सकते हैं एज वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन हैज टू बी इंक्रीज. दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द frequency of incident radiations, but kinetic energy of emitted photoelectron is independent of the intensity of incident radiations. Third point is there exists a certain minimum frequency called threshold frequency, below which no photoelectric emission would take place, and above this frequency stopping potential has to be increased. That means kinetic energy of emitted photoelectron increases with the increase in frequency of incident radiations. Fourth point is photoelectric emission is instantaneous process. The time gap between incidence of radiation and ejection of photoelectrons is very, very small, less than even 10⁻⁹ second. That means photoelectric emission is an instantaneous process. These are the laws of photoelectric emission, which is complete करना है.